Okay, so let's start semiconductor electronics. Our last chapter. Chapter रे मु ए sequence रे जीबी. कौन प्रथमे आमे पढ़िबा ए चैप्टर रे सेमीकंडक्टर कौन सेमीकंडक्टर कौन तो काको सेमीकंडक्टर कुआ जाए ए सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस गुडा को काहे की यूजफुल बिफोर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस समान को बदल रे कौन यूज कर जाउतला आ वर्तमान एमानकर यूज करबार एडवांटेज कौन advantages of semiconductor devices over vacuum tubes कहि भी गोटे गोटे तापरे हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़िबा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर types of semiconductor जेमिति कि intrinsic और extrinsic अच्छा intrinsic माने pure extrinsic माने impure okay अच्छा तापर एक्सट्रिंसिक रे पुणी हमें पढ़िबा पी टाइप और एन टाइप पी टाइप और एन टाइप ऐसे पढ़ सरला परे तापर हमें पढ़िबा पीएन जंक्शन कोन पीएन जंक्शन एंड इट्स बिहेवियर अच्छा तापरे ए पीएन जंक्शन को यूज करके कौन कौन करा जाय तो बेसिकली पीएन जंक्शन को कुआ जाय डायोड मध्ये कुआ जाय तो यूजेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड को प्रकार यूज करा जाय तो एड पीएन जंक्शन डायोड रो बहुत प्रकार सब टाइप अछि को सब टाइप रो को प्रकार यूज तो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड देयर यूज हम सब पढिबा तो यूज गुडा को सब लिखले तुमको से गुडा को जणा पड़ी जिवो गोटे होची हाफ वेव रेक्टिफायर एगुडा सो आर यूज फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर तापरे हमें पढ़िबा आ कोन कोन अछि फोटोसेल light emitting diode सोलर सेल voltage regulator है बेसिकली हमें पढ़िबा जनरेट डायोड डिफरेंट फंक्शन पई डायोड को टिके वेरिएशन करके डिजाइन करा जाय थाए तो एगुडा को हमें स्पेसिफिक पर्पस जंक्शन डायोड भी कहि परिबा बा समान यूज अनुसार भी पढ़ि परिबा जनरेट डायोड अच्छा तो एति की सब पढ़ि सारला परे तापर हमें जिबा हमरो गेट सर्किट गुडा को जिबा लॉजिक गेट्स तापर पूरा हम पढ़बे ଟିକେ बाइनरी नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स हला ऑफ कोर्स आ भीतर हमें और भी बहुत जिनस पढ़िबा जेमिति हो ना ए जो कंडक्टर सेमीकंडक्टर इन्सुलेटर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कर जाय को थ्योरी अनुसार
एडा हम पढ़िबा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर energy क्लासिफिकेशन band, हाँ ऑफ मैटर इनटू क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू कौन कंडक्टर conductor, semiconductor, insulator. yes insulator and semiconductor based on energy band theory ये गोटे इंपोर्टेंट जिनसटा एनर्जी बैंड थ्योरी एटा गोटे पढिबा एडे हमर पीएन जंक्शन इट्स बिहेवियर हमें सब कैरेक्टरिस्टिक सब पढिबा आईवी कैरेक्टरिस्टिक को प्रकार केते वोल्टेज अप्लाई करले केते यू नो करंट फ्लो हुए आईवी कैरेक्टरिस्टिक पढिबा बायसिंग कोन पढिबा बायसिंग Forward and backward bias. हां फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बायस को प्रकार से बिहेव करंती ता पर हम समान कर यूज पढिबा हला एति गेला हमर टॉपिक तो ए चैप्टर रे बहुत इंफॉर्मेटिव जिंस गुडा अछि जो गुडा तुमको मन रखिबा को पड़िबो किंतु बहुत लॉजिकल और न्यूमेरिकल जिंस गुडा को से गुडा सब कहि देबी बुझिबार बहुत जिंस भी अछि चैप्टर रे किंतु ता सहित टिके जे जोडा केमिस्ट्री टाइप रो जिंस पळे आछि ना बहुत गुडा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन गुडा को सब आसीबो हला तो से गुडा को तुमको थरे ए बहिडा पढिबा को पड़िबो स्पेशली इंफॉर्मेटिव जिंस गुडा ए टाइप रो आसे सेमीकंडक्टर कार एनर्जी केते बैंड गैप Intrinsic, केते extrinsic. हम केमिस्ट्री से टाइप टिके जिंस गुडा पळे आसे ना वैलेंसी ऑर्बिट यू नो The chemistry with it actually. हां Same news. तो से गुडा को टिके इंफॉर्मेटिव तुमको घोषिक मन रखिया पड़िबो आ कुछ उपाय नै बळका फिजिक्स रा जहा सब जिंस 8 रु मोस्टली आ परडू ए गुडा को सब सहज ए गुडा घोषिबार नै गुडा बुझिबार आ न्यूमेरिकल भी बढ़िया सॉल्व हो तो हमें ताले कंटिन्यू करबा तो चलो सबरो प्रथमे हमें डिफाइन करबा व्हाट इज ए सेमीकंडक्टर What is a semiconductor? So let's start. What's a semiconductor? So basically, गोटे मटेरियल को यदि हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिबा ताहले से को रेट रे करंट कंड्यूस करे करंट कंडक्ट करे डज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली or with difficulty. Based on this property, the materials are divided into three categories. कौन सब Conductor, semiconductor, insulator. को क्राइटेरिया अनुसार याको भाग करा जायछि based on their property of how easily they conduct electricity. Conductor, insulator, how semiconductor. Based on the property of how easily they conduct electricity. अच्छा एइटे तमे टिके न्यूमेरिकल वैल्यू गुडा टिके मन रखि दबो how easily they conduct electricity तो बहि रे तमर सब दिया जायछि कार कंडक्टिविटी केते से गुडा को टिके मन रखि दबो तो बेसिकली कंडक्टर गुडा कर तुम जदि कंडक्टिविटी बाहर करिवो तो ए गुडा को बहुत हाई धरिनो 10 टू द पावर 5 रू 10 टू द पावर 8 ओम मीटर कंडक्टिविटी राइट बेसिकली कंडक्टिविटी बा रेजिस्टिविटी अनुसार एमानो क्लासिफाई कर जायछि तो कंडक्टर गुडा कर कोन कंडक्टिविटी बहुत हाई एग्जैक्ट वैल्यू तुम बहिरो देखि नै परिबो मो तुम गुडा रफ आईडिया दउछि 10 टू द पावर 5 रू 10 टू द पावर 8 से टाइप रो जिंसटा बहुत हाई कंडक्टिविटी insulator गुडा कर कंडक्टिविटी बहुत लो इट्स लाइक धरिने 10 टू द पावर माइनस 5 6 ए टाइप रो थिबो बुझला एग्जैक्ट वैल्यू बहिरो देखिनो वास्तव हला Yes sir. आ सेमीकंडक्टर गुडा कर जो कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स जदियो आमे साधारणतः ए प्रकार डेफिनेशन द्वारा डिफाइन करू सेमीकंडक्टर कि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नुह बेले बेले किछि मटेरियल अछंती समानकर भी कंडक्टिविटी ए रेंज रे पड़ी जाए बुझला आ ए रेंज गुडा को वेल डिफाइंड भी नुह
एमिति नुह जे कोन जदि जनकर कंडक्टिविटी आ भितर आसुनी माने से कंडक्टर नुह बा यू नो जदि जने बॉर्डर लाइन रो अछि तो ताको कोन कहा जिवो से प्रकार किछ न गुटे ओवरऑल गुटे दिया जाय छै तो एग्जैक्ट प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर रो कोन इट्स सेमीकंडक्टर नॉट ओनली डिफाइंड बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी हां बुझुची मु कोन Yes, sir. कहूची से एडिशनल Yes, sir. प्रॉपर्टी ता व्हिच मेक्स इट वेरी इंपोर्टेंट which makes it very useful also and helpful also because of which we have progressed so much in science and technology especially in communication electronic devices and communication ये सब हमें जो progress जो कर ले digital electronics like making of computers mobiles ये सब हमें जो basically computers जो progress कर चंती एटा से additional property टा यूज है कि कौन से additional property से additional property है you can control the flow of charge carriers. Additional property कौन? The charge carriers means their numbers and flow. Their number and flow can be controlled. सर जो कंडक्टिविटी जो लिखा है जी एनसीईआरटी रे जो डेफिनेशन लिखा है जी कंडक्टिविटी रा सेमीकंडक्टर आ मेटल रो किसटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रे ओवरलैप करछन फॉर एग्जांपल सेम कोच ना सेम कोच तो एगुडा सेमीकंडक्टर रो मेन प्रॉपर्टी से न जे तार कंडक्टिविटी टा कंडक्टर और इंसुलेटर मझी रे तार मेन प्रॉपर्टी है एटा यस सर हमें जहाँ सब डिवाइस गुडा को सब यूज करा जाए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रे गेट सर्किट रे कंप्यूटर रे यू नो एथि पय न जे तार कंडक्टिविटी एमान को मझी रे एथि पय जे हमें आर नंबर और फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर को कंट्रोल करि परिबा control the flow of charge carriers control flow of current control flow of electrons हमें achieve करि परिबा using these materials that's what makes them a semiconductor and that's how they are useful बुझिला yes so in one sense हमें एडा को additional property न कहि एडा को main property कहबा पड़िबो that in a semiconductor the charge carriers can be controlled there can be controlled flow of number or flow of charge carriers बुझिला yes sir अच्छा को प्रकार कंट्रोल करियबो सिंपल जिंसो जेमिति कि टिके लाइट पकेगी टिके हीट देकी टिके वोल्टेज अप्लाई करिगी एगुडा को अप्लाई करिगी से मटेरियल को तमे तार यू नो चार्ज कैरियर को बढ़ाई परिबो कमे परिबो फ्लो करि परिबो फ्लो बंद करि परिबो बुझला लॉजिक जेमे जेमे हम आगो को जिबा ए सब उदाहरण गुडा को त मु जणा पड़िबो जे केते यूजफुल प्रॉपर्टी एडा वर्तमान डेफिनेशन से एडा लिखि दबो तो को प्रकार कंट्रोल करि परिबो कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग by applying light or heat form of energy or heat or small potential difference एमिति हो हला एडा होची हमरो सेमीकंडक्टर तो स्पेशली ए समस्त उदाहरण गुडा तुम लिखि दे पारिबो अच्छा कहलो कंडक्टर किछ उदाहरण कहलो जनरली मेटल्स कॉपर एल्युमिनियम बहुत गुडा लिखि पारिबो हला अच्छा इंसुलेटर किछ उदाहरण डायमंड सिलिकॉन जर्मेनियम ना इंसुलेटर डायमंड एयर सेमीकंडक्टर स्पेशली ये होची सिलिकॉन जर्मेनियम हमें और बहुत किछि पढिबा वर्तमान पे दिडा उदाहरण लिखि देतो हां इनफॉर्मेटिव जिंस गुडा आसी पारे नो सेमीकंडक्टर लिस्ट को हो इंसुलेटर लिस्ट को से किछि गुडे लिस्ट रो दे देला पचला एटा कोन सेमीकंडक्टर ना नाही तो तुमको मन रखि देबो पड़िबो तो टिके ए टाइप जिंस गुडा के केयरफुल रहइबो वंस बहिडा पढि दबो यस सर अच्छा तो हमें बुझी गले सेमीकंडक्टर कोन अच्छा वर्तमान सेमीकंडक्टर गुडा को आर बहुत गुडा टाइप अछि एमानु को जे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर आउ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स
वर्तमान आम जहाँ सब उदाहरण दौले एगुड़ा बेसिकली एलिमेंटाल सेमीकंडक्टर राइट एलिमेंट गुड़ा से सेमीकंडक्टर भाया बिहेव करती जो मानकर चार्ज कैरियर रो नंबर आउ फ्लो को कंट्रोल करियो कंपाउंड सेमीकंडक्टर तमर पुणी हे परिबो कोन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पॉलीमर टाइप ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पॉलीमर तो बहिरु ए समस्तंगर उदाहरण गुड़ा को खोजिकी मने रखिबो बुझा पड़ला yes sir तो व्हाट इज सेमीकंडक्टर सरीला yes sir वर्तमान आमे जिबा जे वर्तमान नेचुरली मनर प्रश्न आसे पारे काहे कि व्हाई डू सम मटेरियल्स आर कंडक्टर्स व्हाई डू सम मटेरियल्स आर इंसुलेटर्स एंड व्हाई डू सम मटेरियल्स आर सेमीकंडक्टर्स तो देयर शुड बी अ थ्योरी ना टू एक्सप्लेन दिस तो से थ्योरीटा होची हमरो एनर्जी बैंड थ्योरी तो आमे बुझिबा वर्तमान से एनर्जी बैंड थ्योरी कोन जे एजेंसी को एक्सप्लेन करूची जे व्हाई सम मटेरियल्स बिहेव एज कंडक्टर्स सम एज इंसुलेटर्स सम एज सेमीकंडक्टर्स एनर्जी बैंड थ्योरी कहे आको बुझिबा पई टिके आमे बोर्ड्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम बुझिबा चलो टिके रिकॉल करो बोर्ड्स हाइड्रोजन मॉडल बोर्ड्स मॉडल अनुसार धरिन एडा हाइड्रोजन एटम एडा न्यूक्लियस एडा फर्स्ट ऑर्बिट एडा सेकंड ऑर्बिट से प्रकार थर्ड ऑर्बिट अछि अच्छा ए प्रकार सब ऑर्बिट गुडा अछि every orbit has its fixed energy level so it's like धरिन एडा ला गोटे isolated hydrogen atom आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम माने भाबिनियो स्पेस रे वर्तमान गोटे हाइड्रोजन एटम अछि ता पाखा पाखी आउ कोन हाइड्रोजन एटम नाही तो से गोटे हाइड्रोजन एटम जदी अछि ताले ता पय हमें पूरा कैलकुलेशन करिक पढि छथि पोस्टुलेट गुडा लगेई की ऑर्बिट गुडा को विषय रे पॉसिबल ऑर्बिट्स कोन हे परिबे ना पॉसिबल ऑर्बिट्स से गुडा हे परिबो जो गुडा कोन mvr = ns/2 पाई एनर्जी बाय 2 पाई आ इलेक्ट्रॉन जतबे सेडा ऑर्बिट करिक बुले से काहे की बुले कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन ए सब गुडा यूज करिक आमे सब बाहर करथिले जे कोन पॉसिबल ऑर्बिट गुडा सार रेडियस केते फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस सेकंड ऑर्बिट रेडियस थर्ड ऑर्बिट रेडियस से गुडा फिक्स सब थिला राइट प्रति ऑर्बिट रे हमें वेलोसिटी भी काढिथिले फर्स्ट ऑर्बिट रो वेलोसिटी सेकंड ऑर्बिट रो थर्ड ऑर्बिट रो सब मन पडुची ना फिक्स होतला यस सर काहे कहले देखियो टिके रेडियस रो फार्मूला हमें कोन बाहर करथिले 52.9 n squared by z करेक्ट a नॉट n स्क्वायर a नॉट अथले 0.529 आर्मस्ट्रांग हला तो वेलोसिटी हमें केते काढिथिले velocity equals v to नॉट v बाय n naught time n v नॉट ता केते थिला v naught equals 2.16 to into 10 to the power 6 2.16 into 10 10 to the power 6 meter per second बा स्पीड ऑफ लाइट बाय 137 राइट ए प्रकार थिला एनर्जी केते थिला बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हमको एतिन दिन से मन रखेला 13.6 z square by n square माइनस 13.6 भूली जाउ छ हां -13.6 मागेना इलेक्ट्रिक टोटल वोल्ट बाय एनर्जी टा हां टोटल मोस्टली एनर्जी नेगेटिव एटेंडा इंफॉर्मेशन मन रखिबार अछि अन्य सब तो कैलकुलेट करि जेबो है ना हम और भी बहुत जिंस कैलकुलेट करथिले कोन सब कैलकुलेट करथिले जे इलेक्ट्रॉन रा बुलछु तार टाइम पीरियड केते तार टोटल फ्रीक्वेंसी केते एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी केते काइनेटिक एनर्जी केते से सेंटर रे मैग्नेटिक फील्ड केते तैयारी करछि तार से जो इलेक्ट्रॉन रा बुलुछि दैट इज इक्विवेलेंट टू करंट लुक तो तार डाइपोल मोमेंट केते ए प्रकार बहुत जिंस कैलकुलेट करथिले राइट गायरोमैग्नेटिक रेशियो केते सब मन रखिया दरकार नै एटा मोस्टली हमें डिस्कशन करबा ए एनर्जी टा को नै की तो एटा को मन रख तो गोटे आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम पाई देखो तार जो पॉसिबल एनर्जी लेवल गुडा को अछि से गुडा को फिक्स्ड फर्स्ट एनर्जी लेवल केते 13.6 हां ये फिक्स्ड तमे जे कोनसी गोटे हाइड्रोजन एटम नबो तो देखियो तार फर्स्ट ऑर्बिट माने तो इलेक्ट्रॉन -13.6 अच्छा सेकंड रो केते हिदिबो -3.4 हां -3.4 अच्छा थर्ड टा केते -1.7 -1.51 हां 51 फोर्थ टा केते फोर्थ ता हबो -0.7 -885 ए टाइप रो किछि थिला एनीवे तो इट्स लाइक वर्तमान तमे भाबो जे तम पाखरे एंड हाइड्रोजन एटम सेपरेट अछंती let's say you have n hydrogen atoms
n हाइड्रोजन एटम्स भिन्न भिन्न बही भिन्न भिन्न एलिमेंट रो उदाहरण देकर बुझांती मु तम बेसिकली कांसेप्ट टा बुझिबार अछि जे कोन ई एनर्जी बैंड हैला हमर बही एनसीईआरटी बही से सिलिकॉन रो उदाहरण देके बुझै छी हमर एचसी वर्मा बही से सोडियम मैग्नीशियम समान रो उदाहरण देके बुझै छी हैला जहां भी कांसेप्ट टा बुझिबार अछि जे कोन हुए आइसोलेटेड एटम आउ ग्रुप ऑफ एटम जतबे एटम गुडा को पाखो को पळे आसिले वर्तमान यू हैव अ सिस्टम ऑफ एटम्स समान भीतर कोन चेंज हुए तो प्रथमे हमें देखिथिले जे एंड हाइड्रोजन एटम अछि यू नो फार अवे फ्रॉम ईच अदर far away from each other अच्छा तो तुम पाखे जदि n दा हाइड्रोजन एटम अछंती उदाहरण पई n को 10 नै जाओ हैला तो 10 टा हाइड्रोजन एटम अछंती प्रति हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी केते आंसर वो -13.6 13.6 प्रति हाइड्रोजन एटम रो सेकंड ऑर्बिट रो एनर्जी लेवल केते आंसर वो -3.4 minus 3. प्रति हाइड्रोजन एटम रो थर्ड ऑर्बिट रो एनर्जी केते आंसर वो -1.51 प्रति हाइड्रोजन एटम रो फोर्थ ऑर्बिट रो एनर्जी केते आंसर वो -0.85 बुझिला yes वर्तमान भाबो से एंड हाइड्रोजन एटम पाखो को पळे आसले गोटे सिस्टम हे गले गोटे जगह रे रहिले गोटे धरिनियो चैम्बर रे रहिले गोटे छोटो बॉक्स भीतर रहिले हैला so now you don't have isolated hydrogen atoms now you have a system of n hydrogen atoms close to each other बुझला yes sir तो वर्तमान तमे जदि जे कोनसी गोटे हाइड्रोजन एटम रो फर्स्ट ऑर्बिट रो एनर्जी बाहर करिवो से आउ -13.6 हे कि नथिबो से टिके चेंज हे जाइथिबो कार -13.6 थिबो कार होय तो -13.4 हे जाइथिबो कार होय तो -13.5 हे जाइथिबो कार होय तो -13.7 हे जाइथिबो कार होय तो -13.62 हेथिबो कार होय तो -13.58 हेथिबो बुझले कि yes sir तो इट्स आमे एनर्जी गोटे ऑर्बिट रो को प्रकार बाहर करथले फर्स्ट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को प्रकार बाहर करथले से इलेक्ट्रॉन दा बुलुची तो तार